So the function was not defined at 3. Actually 3 पे 0 by 0 value दे रहा है. We are trying to find out near x is equal to 3 what happens. How near? Zero point 0.1, that is 2.9. 0.01, that is 2.99. Still closer to 3. Uh, 0.00 2.9999, but it's very close to. And we see that function values become what? They are coming closer and closer to 13, both on the left side, 3 minus delta, and the right side, 3%. I don't know how many of you have actually done this kind of computation when you first studied limit at IBA. Did anybody? Yes, we did in Yes, That's sir. calculus. good. That's good. So that is a practical feel of the delta. हाँ, the problem is the definition क्या रही है कि पहले आपने एप्सिलॉन चूज किया पॉजिटिव, उसके बाद डेल्टा आएगा. ये एक अलग कहानी है कि मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज दूं, ऐसे प्रॉब्लम्स की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊं कि जिसमें आपसे ये कहा जाए कि आप एप्सिलॉन चूज करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डेल्टा निकालें. So that will be at some later stage, maybe not during this review. So ये आपने काम किया हुआ है. That's good. So from both sides, as x approaches 3, either from left side or from the right side, you get the same result 13. Although x is equal to 3 हमने इस पूरी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं किया. We have just written x approaches 3. X approaches 3. So y approaches 13. Y approaches from both sides, we get the same values of y that uh, our results are going towards. So we considered, think of terms of the type right-hand limit. So we work on x less than a plus delta. Right left-hand limit, and we work on x greater than a minus delta. We use special notations for that. And let us say an example. मैंने आपसे कहा था absolute function इस्तेमाल करके जो function define किए जाते हैं. Like this function fx is equal to mod x upon x when x is not 0. But it attains its value is 0 when x is equal to 0. Now this function is neither algebraic nor transcendental. You can say that this is artificially defined function, but it may represent a real uh, physical phenomena. मेरे घर में चेंज ओवर लगा हुआ है, आप लोगों के घर में जिसमें जनरेटर्स लगा होगा, चेंज ओवर लगा हुआ होगा. उस चेंज ओवर में 3 पोजीशंस होती हैं. एक पोजीशन जो है वो नॉर्मल जो पावर सप्लाई आ रही है के की उसके लिए है, एक न्यूट्रल पोजीशन होगी और एक जनरेटर की पोजीशन होगी. सो आई कैन रिप्रेजेंट दैट फंक्शन विद दिस. ये के की लाइट आ रही है, इसको मैं नीचे रखा, ये मेरा जनरेटर चल रहा है, और ना जनरेटर चल रहा है ना के की लाइट आ रही है. So these kind of functions come out of real situations, and it is very clear that if you come close to 0 from right side, what are the y values? They are positive 1. From left side, they may remain negative 1. They they never approach 0, because however close you are to 0, the value of y is -1, will remain -1. And what happened at x equal to 0? That is not a question of limit. So left-hand limit is -1, and right-hand limit is 1. Thus the two limits are not same, so we say that the limit of this function does not exist. The limit of this function does not exist. So let us look at this example. A function. ये फंक्शन आ रहा है x इक्वल टू -2 पर, इसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, और x इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू भी 1 है, यानी लिमिट भी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 और वैल्यू भी 1. So it is connected from the left side, but ग्राफ ऐसा है कि राइट साइड से ये आ रहा है x इज इक्वल टू -2 की तरफ, वैल्यूज आर गोइंग टुवर्ड्स -2 but not connected. So this is connected from the left, not connected from the right. Similarly, at x is equal to 0,
लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है, राइट साइड से कनेक्टेड नहीं है, और राइट से when we are coming along the graph, the function is going to negative infinity. Then close to 4 there is still, so we have different situations for different functions, different points, and this is what we explore in calculus. Continuity of function. I hope my sound is clear still. Yes, sir. Yes, sir. That's good. And I hope recording is going on. Yes. Okay, continuity. So we say that a function is continuous. And now when we talk about continuity, we talk about what happens at x is equal to a exactly. And there, one thing is the value of the function. When you substitute for x the value of a, which we never did while finding out limit. तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाई. लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, राइट हैंड लिमिट जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया, अगर ये सब की सब बराबर हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयर. सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन. लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होंगी, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है. द शॉर्टेस्ट एक्सप्रेशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज दैट लिमिट and the value of the function at some point are same. Now the function must be defined, and it is its value there must be same as the limit of the function. And let us see how the definition of limit now modifies to definition of continuity. चूंकि लिमिट में हमने इस फ्रेंच के अंदर क्या लिखा था? fx minus L is less than epsilon whenever x minus a mod is between 0 and delta. Now we are saying what? Because of the function defined at a, we are saying instead of L, the limit, we have now fa, because continuity requires what? The value of the function is same as the limit of the function. So fx minus fa is less than epsilon whenever x is close to a. अब के हमने greater than 0 नहीं लगाया क्योंकि x is allowed to be a, because x is equal to a, function value exists, and that has to be same as the limit. So continuity can be expressed that function values are in the interval fa minus epsilon and fa plus epsilon whenever x is in the interval a minus delta to a plus delta. We say function is left continuous if value of the function is equal to left limit. We say that it is right continuous when the value of the function is equal to the right limit. First instance हम कहते हैं कि function का graph जो है इस point से a fa से connected है from the left hand side. और second case में जब right continuous है तो हम कहते हैं graph is connected to this point from the right side. A function is continuous at a if the graph of the function is connected at the point from both sides. One-sided limit में एक तरफ से connected है, लेकिन सिर्फ continuity, that means both side connected. तो graph जो है वो it becomes important in our discussion. The function will be discontinuous अगर इन तीन चीजों में से function value, limit of left limit और right limit इनमें से कोई भी एक चीज different हो, function is discontinuous. In general, a function is discontinuous at a point if its graph is disconnected there. What are the possibilities? Discontinuous from left, value of the function is not equal to left hand limit. Discontinuous from right, value of the function is not equal to the right hand limit. Discontinuity from either side, the value of the function na left limit के बराबर है ना right limit के बराबर है. It means all three are different. Removable discontinuity, I hope you must have studied this in bit detail कि function की value तो exist करती हो, function की limit भी exist करती हो, मगर ये दोनों में बराबर ना हो. Limit exist करती है, left और right limit बराबर है, function की value different है, and that is a removable discontinuity. And that can be removed कि अगर मैं function की value को redefine कर दूं to be equal to limit of the function. Now, the definition of continuity in this form, epsilon delta form,
allows us to prove things like this कि अगर आप के पास किसी कोई दो फंक्शन किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, उनकी रेशियो भी कंटिन्यूस होगी अगर डिनोमिनेटर function g is not zero at that point. So we have another example that we can look at and see that at this point the graph is connected from both sides. The function is defined, filled circle. So it is continuous here. But at this point, the function is not right continuous because it is not connected. The right-hand limit is -1, but the unfilled circle indicates that the function is not defined at x equal to -2. So this is not connected from the right side. So it is not right continuous. Similarly, left-hand limit and it's going towards negative infinity. The left-hand limit does not exist. So it is purely discontinuous at this point. Value of the function we define nahi hai. Chalo, qissa hi mukhtar. Next in line is the division of derivability of a function. Now, continuity and function and derivability of function, though are interrelated ideas, but derivability is a special idea. Continuous जब हम discuss करते हैं तो वो भी ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर करते हैं. Derivability consider करते हैं तो वो भी ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर करते हैं. Continuity डिस्कस करते वक्त भी हम ग्राफ के उस पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट. डेरिवेबिलिटी चेक करते वक्त भी हम एक लिमिट निकालते हैं, लेकिन वो फंक्शन की लिमिट नहीं है. इट्स नॉट द लिमिट ऑफ फंक्शन, इट इज समथिंग एल्स. It's the ratio of two numbers, one that gives you the difference of y and the other is giving the difference of x. So it is not the limit of the function, it is limit of the ratio of change in y and change in x, or rate of change of function. A function is derivable if this limit exists. Now, there are two things that you need to concentrate when talk about differentiability or derivability. One is that it is a limiting process. One is that किस चीज की लिमिट है. पहली चीज limit. We have just studied limit and continuity and we see that at its core idea, the limit has to be calculated from two sides. X approaches a from left side, x approaches a from right side. तो अब ये जिस चीज की भी लिमिट निकाली जा रही है दोनों साइड से निकाली जाएगी. So when this limit exists, that means left से निकालो या right से निकालो, ये limit same आए. Only then it exists. It has to be, and when it exists or it is defined, means this limit is real, finite, and unique. And we call it derivative of the function at x equal to a. We denote it as f prime a or dy by dx at x equal to a, where y is equal to fx. Now this limit can be written in different forms. In order to find the limit, you have to work out the left limit and the right limit. And that means h approaches 0 instead of x approaches a. And what is h? H is either on the right of a, so a plus h, or the left of a, that is a minus h. So you should have this also considered as plus minus. ये आ नहीं रहा उसके अंदर. अब आया plus minus another. Yes. So when we have to see that function is derivable or not, हमने ये दोनों लिमिट्स निकालनी होंगी. एक दफा a plus h के साथ और नीचे प्लस, और एक दफा a minus h के साथ और नीचे माइनस. अगर प्लस के साथ कर रहे हैं तो हम इस लिमिट को, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं. अगर हम माइनस h के साथ कर रहे हैं यही काम, तो फिर इस लिमिट को अगर ये एग्जिस्ट करे तो हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं.
फंक्शन इज डिराइवेबल डिफरेंशिएबल अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, और ये दोनों बराबर हैं. So derivability issue is a little bit more complicated an issue as compared to limit and continuity, where I have to work when I talk about continuity or limit, मुझे f plus f at a plus h और f at a minus h सिर्फ फंक्शन को स्टडी करना है. लेकिन जब मुझे डेरिवेबिलिटी स्टडी करनी है तो f a plus h minus f a divided by h और f a minus h minus f a divided by minus h, ये स्टडी करना है. और इनको इवेल्युएट करके देखना है कि दोनों बराबर है नहीं. अगर ये दोनों बराबर हैं तो डेरिवेटिव डिफाइंड है या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. Also note that it can be easily proved that if a function is derivable, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं at some point, then it is necessarily continuous there, और perhaps आपके कैलकुलस टीचर ने आपको ये कराया भी. However, the converse of this is not necessarily true, that if function is continuous, तो derivable भी होगा. Let us see this example. I've considered this function defined in two pieces. Artificially defined function है लीनियर पोलिनोमियल, लेकिन दो लीनियर पोलिनोमियल, एक इस्तेमाल किया गया for x greater than or equal to और एक इस्तेमाल किया गया x less than 2. So 2x minus 3. So let us consider the graph of 2x minus 3 when x is greater than 2, and this is the graph. When x is less than 2, the graph has to represent minus 3x plus 7, and we see this graph. हाँ, अगर x equal to 2 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. हाँ, अगर x equal to 2 दूसरे में भी होता तो भी वो 1 देता. So the graph is connected at x equal to 2 with y value 1. So the function limit left hand हो या right hand हो, 1 है. Value of the function according to this first line is 1. So function is perfectly continuous at x equal to 2. But when we look at the derivative, I have to evaluate this. f of 2 minus h. Left hand side के लिए minus 3x plus 7 है. तो मैं x की जगह 2 minus h रख के नीचे minus h रख के ये लिमिट इवेल्युएट करता हूँ और वो आती है -3, because on the left hand side the slope is -3. Right hand, f of 2 plus h minus f2. So it has to be 2x minus 3 according to the formula. And I simplify this and get the value. I will get the limit 2. So left hand derivative is -3, right hand derivative is 3. They are not same. So when we have explored derivability, we have to explore this kind of limit from both sides. When left hand derivative is not equal to right hand derivative, we say that the function is not differentiable. Now it's a familiar geometrical property that the derivative, if it exists at some point, it represents the slope or gradient of the line tangent to the graph at x equal to a. Now, basic definition of derivative that we studied, कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो फंक्शन डिराइवेबल होगा. इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जिस फॉर्म में कि आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए पढ़ा था. इट इज द सेम थिंग. अगर मैं x माइनस ए को डेल्टा x कह दूं तो x की जगह x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा और डेल्टा x सब कुछ 0 आ जाएगा. दिस इज द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके जरिए सारे एलिमेंट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फॉर्मूला मालूम किए जाते हैं, along with some techniques of differentiation like u into v rule. u into v का डेरिवेटिव u prime plus v prime into u upon v का डेरिवेटिव, and they lead to many differentiation formulas, and you can see the list in many books and in the on the internet and blah blah places. One last thing before I go to the differential properties and analysis of function is that if you have two functions product, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपने u into v रूट के तौर पे पढ़ा है,
लेकिन अगर मुझे 5th डेरिवेटिव या 10th डेरिवेटिव या 500 डेरिवेटिव निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, तो फिर मुझे क्या करना है? दिस इज नोन लाइबनीज थ्योरम. Nth derivative of product is evaluated using nth derivative of the first function, second as it is, plus n times n minus 1 derivative of first function, first derivative of the second function, plus n minus n into n minus 1 upon 2 factorial. One order less of derivative of the first, one order more of the second function. And we see the pattern, the coefficients n, n minus 1, n into n minus 1 upon 2 factorial, n into n minus 1, n minus 2 upon 3 factorial. ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं. प्रोडक्ट्स टर्म्स जो आ रही हैं इसमें एक दोनों फंक्शंस आ रहे हैं. पहली टर्म में फर्स्ट फंक्शन का हाईएस्ट डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज. फिर फर्स्ट फंक्शन का एक ऑर्डर कम हुआ डेरिवेटिव का, सेकंड का फर्स्ट ऑर्डर आ गया. अगली टर्म में फर्स्ट फंक्शन का एक ऑर्डर और कम हो गया, सेकंड का एक ऑर्डर बढ़ गया अगली टर्म में. सो फर्स्ट और फंक्शन के ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कम होते चले जा रहे हैं, सेकंड फंक्शन के ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 0 से शुरू होकर 1 2 3 बढ़ते चले जा रहे हैं. और बाइनोमियल कोफिशिएंट की तरह ये भी इस वैसे ही कोफिशिएंट खत्म हो रहे हैं. आखिरी टर्म जो है फर्स्ट फंक्शन का 0th डेरिवेटिव है और सेकंड फंक्शन का nth डेरिवेटिव. ये फॉर्मूला जो है हायर डेरिवेटिव्स निकालने के लिए फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस वेरी यूजफुल एंड सम अदर केसेस आल्सो. सो लेट अस, अगर आप लोग थक ना गए हो तो आई प्रोसीड फर्दर और शुड आई स्टॉप हियर? हेलो. जी सर. should I continue or stop? आपकी मर्जी. अच्छा, मेरी वैसे भी 20 मिनट है. हाँ, मैं एनालिसिस ऑफ फंक्शन की कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर खत्म करूंगा. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. If you have a function, you say that it is steadily increasing over an interval AB, कि अगर इंटरवल के दो x वैल्यूज लूं, इसी इंटरवल की दो x वैल्यूज लूं, so that x1 is on the left and x2 is on the right, then the value of function is smaller at left side and larger or equal on right side. ये steadily increasing डिफाइन करने के लिए मैंने फंक्शन पे कोई कैद नहीं लगाई, सिर्फ ये कहा है, यानी कैद से मतलब मैंने नहीं कहा कि कंटिन्यूअस हो, कुछ भी नहीं कहा. बस ये कहा है कि एक इंटरवल के दो पॉइंट्स लिए, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू छोटी और राइट साइड पे बड़ी या ज्यादा बराबर. तो आपको कोई स्टेयर फंक्शन आ रहा है जहन में? 0 से 1 तक उसकी वैल्यू 0 है और जैसे ही 1 हुआ जंप करके 1 चला गया. 1 से 2 तक उसकी वैल्यू 1 है और जैसे ही x2 हुआ जंप करके 2 पे चला गया. ऐसा फंक्शन देखा था? अच्छा चलो, नहीं देखा था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं देखा था. मैंने अभी आपको एक फंक्शन दिखाया और मैंने कहा रियल सिचुएशन से रिलेटेड है ये फंक्शन. मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ -1 से +1 तक का इंटरवल लूं तो क्या सूरत हाल है? एक x वैल्यू यहाँ की उठाऊं, एक x वैल्यू यहाँ की उठाऊं. लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर है, राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू लार्जर है ना? लेकिन जो मैंने इंटरवल लिया है उस इंटरवल में अगर दोनों x वैल्यू यहाँ से उठा लूं तो दोनों x वैल्यूज पर y की वैल्यू सेम है. सो ये स्टेडीली इंक्रीजिंग है. सो स्टेडीली इंक्रीजिंग में increase, yani moving left to right, the function will have larger and larger value, but somewhere it may have same value, and that will be the case when the function will not be continuous. Anyways, तो हमने increasing function define किया
steadily, and then we define uh, steadily decreasing function with a similar thing. On the left, the function has a larger value. On the right, the function has a smaller value or equal value. If we remove equality from both these definitions, then we have strictly increasing. Still, we have not talked about continuity, but strictly increasing means that on a left side point, the function is smaller. On the right side point, the function value is larger. So it is ever increasing within an interval. Similarly, strictly decreasing. It can easily be proven that if a function which we are talking about कि ये strictly increasing है और strictly decreasing है, अगर ये differentiable है तो continuous भी होगा over the interval AB, and it is strictly decreasing, then the derivative must be positive. When function is going like this, नीचे से ऊपर जा रहा है, the slope of the tangent has to be positive. And when it is strictly, and then we say that the interval AB is the interval of increase for the function. इसी तरह interval of decrease define किया जा सकता है, where the derivative will be negative. Okay. In order to determine whether a function is decreasing over some interval, what we have to do? We take the derivative of the function and explore whether the derivative is negative or not. अगर derivative negative है तो इस interval पे function decreasing है, अगर derivative positive है तो इस interval पे function increasing है. And let us see this graph. Decreasing, 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 then increasing, then again decreasing, decreasing, increasing, increasing. See that wherever the function is increasing, tangent draw करोगे तो that will be positive. जहाँ decreasing है tangent draw करोगे तो with इसका slope negative होगा. This is what we described above. Wherever the function is decreasing, the derivative is negative. Wherever it is increasing, the derivative is positive. And then we talk about relative extrema. A function has relative maximum at a point x is equal to a. पहली कंडीशन तो ये कि वहां पे डेरिवेटिव जीरो हो. दूसरी कंडीशन क्या है? It is increasing to the left of the point and decreasing to the right of the point. Relative maximum. Now here it is relative maximum. This point per slope of the tangent is 0. On the left, the function is increasing. On the right, the function is decreasing. On the left, the derivative is positive. On the right, the derivative is negative. So, a point which is called relative maximum, उस point पे derivative changes its sign from being positive on left to become negative on the right. Relative maximum. Derivative यहाँ positive है, यहाँ negative है. तो डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे जहां डेरिवेटिव जीरो है, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम है. इसी तरह रिलेटिव मिनिमम के लिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मिनिमम, this or this. On the left, the function is decreasing, that is derivative is negative. On the right, the function is increasing, that is derivative is positive. So, to decide whether an extreme value is maximum or minimum, मुझे सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है. मैं फर्स्ट डेरिवेटिव एनालिसिस से ही डिसाइड कर सकता हूँ कि किस पॉइंट पर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे रिलेटिव मिनिमम है. सो फंक्शन हैज अ रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू a अगर वहाँ डेरिवेटिव जीरो हो, और क्लोज टू a on the right the derivative is negative, on the left the derivative is minimum. लेफ्ट पे मिनिमम के लिए लेफ्ट क्या होगा?
मिनिमम पे लेफ्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव, मिनिमम पे डेरिवेटिव लेफ्ट पे नेगेटिव, वो राइट था, सही, डेरिवेटिव नेगेटिव ऑन दी लेफ्ट, ठीक। सो ये चीज जो है आमतौर पे कैलकुलस में पढ़ाई जाती है और बताई जाती है कि सेकंड डेरिवेटिव के बगैर भी हम रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड कर सकते हैं। और आपको क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट का फर्क भी बताया जाता है कि अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है या डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, तो हम ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है तो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम आ रहा है वो स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि वहां डेरिवेटिव 0 है। लेकिन नोट करने की बात ये क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन से कि हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां डेरिवेटिव या तो 0 हो या डिफाइंड ना हो। तो स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है तो स्टेशनरी पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है, बट एवरी क्रिटिकल पॉइंट need not be stationary points. Now this point where derivative is 0 is a critical point, but this is another possibility. It is neither maximum nor minimum. So derivative 0 critical point है, लेकिन critical point होने के बावजूद ये point ना maximum है ना minimum है. And then comes the concept of concavity. If there is an interval AB, we say that the function is concave upwards or it has concavity upwards if the derivative increases on this interval. अगर derivative increase हो रहा है तो second derivative positive होगा. So actual definition of concavity upward is के वो interval जिसमें derivative increase कर रहा हो. For example, यहाँ पे concavity upward है, डेरिवेटिव यहाँ नेगेटिव था, 0 हुआ, पॉजिटिव हो गया, 0 से नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, इसका मतलब है डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है. जब डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव ने पॉजिटिव होना है. Now this is concavity downward. On the left derivative is positive, then it becomes 0 and then it becomes negative. इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है. जब डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. So in this way we define concavity. Geometrically, what happens when concavity upward or concavity downward, tangent line की क्या सूरत हाल होगी? Going back to this graph, ये रीजन है concavity upward का, tangent line ड्रॉ करोगे तो ग्राफ के नीचे आएगी. ये लाइन है concavity downward का, तो यहाँ tangent ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ के ऊपर आएगा. So that is described here. What happens to the tangent to the function in case of this concavity or that concavity. So in the geometrically, line tangent to the graph or the function lies above the graph when concavity is downward, and it is below the graph when concavity is here. This figure shows concave down and the tangents are upwards. Now, where the concavity changes, what happens?
When concavity changes, we say that there is a point where concavity is neither downward nor upward, and that point is an inflection point. और अर्लियर स्टडी में हम देखते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम उस पॉइंट को कहा करते थे जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो. ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. So you can have a point here where the concavity is changing from downward to become upward. So that's an inflection point. Here concavity is upward, here the concavity is downward, and concavity is changing at this point, so it's an inflection point. This inflection point, the derivative is zero. But see here, concavity downward, concavity upward. Here is the point where the concavity is changing, and here, in contrast to this, यहाँ पे tangent ग्राफ को क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी tangent ग्राफ को क्रॉस कर रहा है, but यहाँ tangent zero है, whereas at this point the tangent is vertical. So being vertical, we have tangent not defined, or slope not defined, or gradient not defined, second derivative not defined. So we can have this possibility. So at an inflection point, the tangent of the graph crosses the graph. It is neither below the graph nor